So hello everyone. So today we'll be discussing about something SEEMP, what it is all about. So SEEMP is the Shipboard Energy Efficiency Management Plan, and it's a kind of very ship specific plan. So it can't be on a company level. So it's a very ship specific plan, and as the name suggests, energy efficiency. So the main motive of this plan is to like the emission which from the ship should be reduced to lower down the air pollutions caused by the emission of NOx, SOx, particulate matters, and all that. So this is achieved by EEXI, EEDI. So what is EEXI and what is EEDI? EEXI, that is Energy Efficiency Existing Index, is basically a tool which measures the carbon emission of the present sorry energy efficiency design index. So basically it's a kind of tool which measures the emission of CO2 of a ships of a present, and it is installed at the time of the ship building time itself. And apart from that, EEXI for the ships, before it is implemented for the ships constructed before 2024, like the even they have to maintain a strict control of the emission of CO2. So the release of the emission per nautical mile, the consumption of fuel oil, according on that basis they have to maintain a log of that. So and CII, it's a बेसिकली हिंदी में बताता हूँ यार. देखो क्या है ना कि अभी जो प्रेजेंटली शिप है, ठीक है, उनका जो कार्बन एमिशन हो रहा है इसको रोकना है, कम से कम करना, ताकि जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसको रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस डाउन द एयर पोल्यूशन. सो बिकॉज ऑफ दैट द एमिशन शुड बी स्टॉप, राइट, और कंट्रोल्ड. तो इसमें ये कहता है कि जो पुराने शिप्स हैं, अभी के लिए तो फिलहाल EEDI डाल दिया, एनर्जी एफिशिएंसी डिज़ाइन इंडेक्स. मतलब जब वो शिप बन रही होती है एट अ टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट ओनली, दे विल हैव टू फॉलो अकॉर्डिंग टू EEDI, ओके, द इंडेक्स ऑफ द कार्बन एमिशंस अपॉन देयर, लाइक एट व्हाट वी से, लाइक कितने माइल तक चल रहा है और कितना एमिशन कर रहा है, ठीक है. एंड EEXI इज़ फॉर द ओल्डर शिप्स बिफोर 2024, लाइक दे ऑल ऑल्सो हैव टू फॉलो दिस. Not exactly EEDI, but at least somewhere to that. So they have EEXI. So for the existing ship index, right? Apart from that, CII एक कार्बन इंडिकेटर इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली, जो आपका एमिशन होता है उसका एक रिकॉर्ड रखता है. ये दोनों जो EEXI और EEOI है, इन दोनों को वो एक अपना वैल्यू देता है, राइट. अगर वो वैल्यू से मैटर नहीं करते, राइट, फॉलो नहीं करते, तो नेक्स्ट टाइम उनका जो सर्टिफिकेट है वो उनको मिलता नहीं है, ठीक है. सर्टिफिकेट से याद आया, जो सर्टिफिकेट है इनका एनर्जी एफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वो लाइफ टाइम का है. तो अगर नहीं किया तो सो बेसिकली इसका तो जो सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम होता है. सो उसमें वापस से जो CII इनको जो देता है, ठीक है, उसे अमेंड करने को कहेगा उनके प्लान में, कैसे भी करके इनको कम पे आना पड़ेगा. सो अभी हमने जो बोला उसको एक बार देखते हैं. डिस्क्राइब द फॉलोइंग. EEDI, एनर्जी एफिशिएंसी डिज़ाइन इंडेक्स, इज़ अ टेक्निकल मेजर दैट इज़ a tool that can be implemented during the design and construction stage of the vessel, and it measures the amount of CO2 emitted by the ship. Okay, tool that can be implemented during the design and construction stage of the vessel, and it measures the amount of CO2 emitted by the ship per capital mile ton. ठीक है. फिर EEOI क्या है? सो EEOI एक मेथड है जिससे वो जितना कंज्यूम कर, अलाउ शिप टू मॉनिटर कार्बन एमिशन विच कैन बी डिटरमाइंड बाय द शिप्स
ship's fuel consumption in a particular voyage carrying a certain amount of cargo. The formula to calculate EOI is provided in EEDI technical file. टेक्निकल फाइल में EEDI के उसमें दिया है. इट्स अ टेक्निकल मेजर दैट्स अ टूल दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड. ठीक है. एनर्जी efficiency existing ship index, CO2 emission of existing by setting minimum requirement for technical efficiency and comes into force on 1st Jan 2023 for ships of 400 gross tonnage and above. CI का काम क्या है? द कार्बन इंटेंसी इंडिकेटर इज अ मेजर ऑफ अ शिप्स एनर्जी एफिशिएंसी इन रिलेशन टू अमाउंट ऑफ CO2 emissions produced per unit of transport work. The carbon intensity indicator is a measure of a ship's energy efficiency in relation to the amount of CO2 emission produced per unit. The carbon indicator is a measure of ship's energy efficiency in relation to the amount of CO2 emission produced per unit of transport work. The oil content, the CII regulates the operation of all real life of CO2 emission from ship. It is based on the annual fuel consumption. From 1st Jan 2023, all ships will have to report the CII each year based on their actual fuel oil consumption. से पहले क्या है की फीचर ऑफ SEMP इसमें मतलब पहले बोला है कि एनहांसमेंट ऑफ शिप एफिशिएंसी का उनको बोलते हैं कि फ्यूल बचा के चलाना है तो लंबा देर तक जाएंगे, ऐसा लिखा है. द प्राइमरी ऑफ द SEMP इज टू इम्प्रूव द ओवरऑल ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द शिप इन लॉन्ग रन बाय इम्प्लीमेंटिंग करेक्ट एंड ऑप्टिमाइज्ड एनर्जी एंड फ्यूल सेविंग मेथड. बाय इम्प्लीमेंटिंग like efficiency operational overall operating efficiency of the ship in long run by implementing correct and optimized energy and fuel saving method. दूसरा reduction in fuel consumption. SEMP is to implement method that can reduce the overall fuel consumption of the ship as it leads to reduction in air pollution. As it leads to a reduction in air pollution and fuel cost, which is one of the high operating cost of the vessel. The operating cost of the vessel. CMP is to implement method that can reduce the overall fuel consumption of the ship as it leads to reduction in air pollution and fuel cost. Which is one of the high operating cost of the vessel. A decrease in greenhouse emission from the ship. SEEMP emphasizes reducing the greenhouse emission from ships by providing method for reducing fuel consumption and using alternative fuel which can causes less GHG emission. A decreasing in GHG emission from the ship. SEEMP emphasizes reducing greenhouse gas emissions from ships by providing method for reducing fuel consumption and using alternative fuel which causes less GHG emission. SEEMP emphasizes reducing greenhouse gas emission from ships by providing method for reducing fuel consumption. SEEMP emphasizes reducing greenhouse gas emission from ships by providing method for reducing fuel consumption and using alternative fuel which cause less GHG emission. SEEMP emphasizes reducing greenhouse gas emission from ships by providing methods for reducing fuel consumption and using alternative fuel which causes less GHG emissions. ठीक है. अब इसके अंदर बोला क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किसको क्या लगेगा. ठीक है. इसमें से एक चीज़ याद करने से Annex 1 के लिए अपने को चाहिए कार्गो रिकॉर्ड बुक 1 and 2 एंड उसका IOPP सर्टिफिकेट. ठीक है. इंटरनेशनल ऑयल पोल्यूशन प्रिवेंशन सर्टिफिकेट. एंड पार्ट 2 के लिए अपना नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंस, तो उसके लिए अपने को चाहिए क्या, कार्गो रिकॉर्ड बुक एंड अपार्ट फ्रॉम दैट PNM मैनुअल. और वैसे सर्टिफिकेट नहीं है PNM मैनुअल. सो डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस विद द रेगुलेशन ऑफ नहीं हाँ सॉरी डॉक्यूमेंट नहीं यार, इंटरनेशनल रेगुलेशन प्रिवेंशन सर्टिफिकेट. ओके. इसका भी है प्रिवेंशन सर्टिफिकेट फॉर कैरियर्स ऑफ नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंस इन बल्क. ठीक है. ये याद रखना है यार. फिर उसके बाद तीसरा बोलता है डॉक्यूमेंट ऑफ कैरियर्स ऑफ पैकेज डेंजरस गुड.
इंटरनेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन सर्टिफिकेट कैरियर ऑफ नाउ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, ओ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस रहता है इसका, डॉक्यूमेंट फॉर कैरियर ऑफ पैकेज डेंजरस गुड। चौथा इंटरनेशनल सीवेज पोल्यूशन, ठीक है। पांचवा डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस फॉर अप्रूव्ड गार्बेज मैनेजमेंट प्लान अंडर मार्पोल 5, डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस फॉर अप्रूव्ड गार्बेज मैनेजमेंट प्लान अंडर, ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। इंटरनेशनल IAPP इंटरनेशनल एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन सर्टिफिकेट, दैन इंजन, इसके लिए भाई साहब 3 सर्टिफिकेट हैं। कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन बेसिकली बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स हैं और बहुत सारी, कोई बहुत बड़े एक्सीडेंट के बाद सारे मेंबर्स आते हैं और वो एक कन्वेंशन बनाते हैं ना। तो कन्वेंशन इज़ एन एग्रीड सेट ऑफ रूल्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर मैटर, फॉर एग्जांपल सेफ्टी ऑफ लाइफ, SOLAS फॉर सेफ्टी रिलेटेड मैटर्स एट सी। So basically SOLAS is a convention, right? Code is code is the part of a convention itself. Like for example, SOLAS is a convention, right? In SOLAS there is chapter 3 for life-saving appliances. So all the detail is given in LSA code. So from that we can get the details, technical details of the LSA code. So basically code is a more technical details of the convention. Code is a part, other hand is a part of convention, is quoted with in the convention. It provides the technical aspect of the element to which the convention is referring to. फिर उसके बाद आता है amendment, is basically on time to time there is a kind of changes in the in the rules to meet the like the technology in the rapid evolving technology in shipping world, regulation enforced by the convention required amendment frequently from time to time to keep pace with the rapid evolving technology in the shipping world. प्रोटोकॉल क्या होता है? एक मेजर अमेंडमेंट, ठीक है। When a major amendment is to be incorporated on regulation of the convention, a protocol is called among the countries who are signatory of the original convention when it was signed. मतलब अगर कोई कन्वेंशन आया था, जिसने कंट्री ने उसके लिए सिग्नेटरी जो थे उसके लिए जिन्होंने बनाया था, ठीक है, ओरिजिनल कन्वेंशन वो साइंड एंड अप्रूव्ड, कंट्री हु आर सिग्नेटरी ऑफ द ओरिजिनल कन्वेंशन को बुलाया जाएगा और वो कोई बड़ा करेंगे, वो स्पेस वॉज द कन्वेंशन है मैंने वो पास में प्रोटोकॉल। व्हेन अ मेजर अमेंडमेंट इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड ऑन रेगुलेशन ऑफ कन्वेंशन, when a major amendment is to be incorporated on regulation of convention, a protocol is called among the countries who are signatory of the, when a major amendment is to be incorporated on regulation of the convention, a protocol is called among the countries who are signatory, मतलब अब कोई अगर major amendment करने का है, is to be incorporated on regulation of the convention, and protocol is called among the countries who are signatory of the original convention when it was signed and approved. Like for example, Marpol 73/70. The year 73 when the act was passed was the convention, and 78 was passed was the protocol. Okay, Marpol का वो करने का है, like major amendment is to be in the regulation of the convention. Okay, protocol is called among the countries. A protocol is called among the countries who are signatory of the original convention. ठीक है भाई। हांगकांग कन्वेंशन क्या है? फंडामेंटली साउंड रिसाइकल, हाँ उसके अंदर क्या ही ये एस्बेस्टोसिस वगैरह स्क्रैपिंग के टाइम पे काम आता है। रेगुलेशन इन, इसका लास्ट पार्ट पढ़ लेते हैं। एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग विदाउट कंप्रोमाइजिंग द सेफ्टी and operating efficiency of the ship, the operation of ship recycling in facilities in a safe and environmentally sound manner, and the establishment of an appropriate enforcement mechanism for ship recycling, incorporating certification and reporting, okay, and supporting requirements, ठीक है। रिव्यूड बाय क्लासिफिकेशन, ठीक है। ग्रीन हाउस पासपोर्ट रिव्यूड क्या आती है? क्लासिफिकेशन सोसाइटी के हर 5 साल बाद, ठीक है। वैल्यूज ऑफ द वेसल, बी रेडी टू प्रोवाइड ऑल मैंडेटरी सर्विस एंड गेन एडेड, assent and compliance with new regulation during construction stage of new vessel, helps to recycling or to formulate a safe and environmentally friendly way of scrapping the vessel, minimizing the impact of ship's operation and the minimizing the ship's operations on the environment, helps to raise staff awareness of the materials on board that require special handling, ठीक है।
तो लोड लाइन कन्वेंशन के बारे में क्या ही है। लोड लाइन कन्वेंशन यार अपना बेसिकली इसमें ये कहता है कि पहला तो पूरा उसका क्या लोड लाइन है, समर, विंटर, ट्रॉपिकल, तो पूरे वर्ल्ड को उसने डिवाइड कर दिया अलग अलग जोन में। फिर ये लोड लाइन का कैसे क्या डायमेंशन रहेगा वो बताया कि यहाँ से जाओगे तो इतना इतना अलग अलग बताया। फिर उसमें ये बताया कि जो अभी टिम्बर कार्गो कैरी करते हैं उनके लिए छोटा वाला फ्री बोर्ड मतलब लोड लाइन वो यूज़ करेंगे, ये वाला लोड लाइन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये लोग ने बोला क्या कि अपना और भी है जो अपना हैचेस वगैरह है, डेक्स पे जो ओपनिंग्स है, और ये जो लोड लाइन वगैरह की मिडशिप पे होना चाहिए, ठीक है। फिर साउंडिंग पाइप्स है, सारे के सारे वेल अरेंज्ड होने चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसा चांसेस नहीं हो पानी घुस जाओ जहाज डूब जाए, ठीक है। इसका मेन रीज़न ये है कैप्साइजिंग नहीं होना चाहिए जहाज़ का। द कन्वेंशन इंक्लूड 4 एनेक्सेस। पहला एनेक्सेस है जनरल कंडीशन ऑफ असाइनमेंट ऑफ फ्री बोर्ड स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ शिप असाइंड टिम्बर फ्री बोर्ड। पहला वन जो है जनरल कंडीशन लाइक इनटू 4 चैप्टर 1 एनेक्स 1 4 एनेक्स दिए हुए हैं कन्वेंशन के। पहले ही के अंदर चैप्टर 4 पार्ट 4 चैप्टर है। जनरल कंडीशन असाइनमेंट ऑफ फ्री बोर्ड्स स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ शिप्स असाइन टिम्बर कार्गो, ठीक है। फ्री बोर्ड्स कंडीशन ऑफ असाइनमेंट ऑफ एनेक्स टू कवर जोन्स, ठीक है, कौन सा एरिया है। तीसरा कौन सा लोड, अभी इसमें तो लोड लाइन सर्टिफिकेट ही मिलता है, कंटेन सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल लोड लाइन सर्टिफिकेट। एक अपने को बताया कि इसके अंदर सर्टिफिकेट होता है, अब उसका वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ कन्वेंशन। जैसा अपना 16 में रहता है ना लास्ट में वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस, वैसे इसके अंदर भी दे रखा है। जैसे वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस 16 में चैप्टर मुझे लगता है जहाँ तक याद आ रहा है 11 है क्या, वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस कंटेन सर्टिफिकेट्स इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल लोड लाइन सर्टिफिकेट, ठीक है भाई। वेरिफिकेशन ऑफ द कंप्लायंस आगे क्या बोला ऊपर स्टार्टिंग में, अडॉप्शन लोड लाइन अडॉप्टेड बाय आईएमओ प्रोविजंस आर मेड 1966 से कुछ याद आ रहा है, हाँ इंटरनेशनल फैसिलिटेशन करके कुछ था ना एक, वो भी 66 में आया था। द रेगुलेशन टेक इनटू अकाउंट द पोटेंशियल हजार्ड्स प्रेजेंट इन डिफरेंट जोन्स एंड डिफरेंट सीजन। द टेक्निकल एनेक्स कंटेन्स several additional safety measures concerning doors, spring ports, hatchways and other items. The technical annex contains several additional safety measures concerning doors, spring ports, hatchways and other items. The main purpose of these measures is to ensure the watertight integrity of ships' hulls below the freeboard deck. The regulation take into account the potential hazards in different zones and different seasons, regulating the potential hazard present in different zones. This technical annex contain several additional safety measures concerning doors, spring ports, the main purpose of this measure is to ensure the watertight integrity of the ship's hull below the freeboard deck. All assigned load line must be marked on it together with deck line. Ship intended for the cargo or smaller freeboard is okay. Load line adopted by the IMO provision are determining the freeboard of ships by subdivision and damage stability calculation. Made for determining the freeboard, basically determining the freeboard of ships by subdivision and damage stability calculation. ये अपने को मुंह में आना चाहिए जब बोलेंगे तो क्या है, बोलेंगे ships by subdivision and damage stability calculation by subdivision and damage stability calculation by subdivision, determining the freeboard by subdivision and stability for damage stability calculation and damage stability calculation verification of, ठीक है। What is the facilitation आ गया ना, the convention, fall convention. The convention on facilitation of maritime traffic was adopted by international conference 1967 में 66 में था वो, और ये 67 में आया है, ठीक है। और ये भी कन्वेंशन पर्पज फैसिलिटी मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट बाय सिंप्लीफाइंग मिनिमाइजिंग द फॉर्मेलिटीज
सिंप्लीफाइंग एंड मिनिमाइजिंग याद आना चाहिए. फॉर्मेलिटी, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर विद अराइवल, स्टे एंड डिपार्चर ऑफ दिस एंगेज ऑन इंटरनेशनल वॉयजेस. The convention emphasizes the importance of facilitating like documents, IMO required assembly for is contracting, general declaration, cargo declaration, ship stores declaration, crew effect declaration, crew list, passenger list, dangerous goods manifest. ना याद रखना है, ठीक है. नायरोबी, ठीक है भैया. द संकन और स्टैंडर्ड कन्वेंशन डिफाइंस ब्रेक फॉलोइंग अपॉन अ मैरीटाइम कैजुअलिटी एज अ संकन और स्टैंडर्ड शिप. What are 4 into 16? What are the contents? ये तो ठीक है यार, इतना याद करना है. अच्छा, मैंने क्या बोला था, 11वां है ना वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस, लेकिन 10वां 11 13वां है वो आंसर. एडिशनल सेफ्टी मेजर्स ऑफ बल्क कैरियर के बाद है वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस. फिर उसके बाद सेफ्टी मेजर्स फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर, देन सेफ्टी मेजर्स फॉर शिप्स कैरिंग इंडस्ट्रियल पर्सनल. फिर लास्ट में है सर्टिफिकेट स्पेशल मेजर टू एनहांस मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. 11वें में है स्पेशल एडिशनल सेफ्टी. 11वें स्पेशल मेजर्स टू एनहांस मैरीटाइम सेफ्टी मैनेजमेंट फॉर शिप ऑपरेशन ऑफ शिप्स, न्यूक्लियर शिप्स, कैरियज ऑफ कार्गोज एंड ऑयल फ्यूल्स, कैरियज ऑफ डेंजरस गुड्स, कैरियज ऑफ कार्गोज एंड ऑयल फ्यूल्स, कैरियज ऑफ डेंजरस गुड्स, carriage of dangerous good and oil fuels, carriage of dangerous good, radio communication, life saving appliances, fire protection, fire detection and fire extinction. Document required to be carried on board ship. List of resolution adopted by SOLAS conferences. List of resolution adopted by SOLAS conferences. Certificates and documents required to be carried on board ships. A list of resolution adopted by the SOLAS conference to which all ship SOLAS is not applicable. SOLAS doesn't apply to unless stated expressly. SOLAS does not apply to unless stated expressly. Ships of war and cruise ships, cargo ships of less than 500 tons gross tonnage, ships not propelled by mechanical means, wooden ships, fishing vessels, ships not propelled by mechanical means, cargo ships of less than 500 tons gross tonnage, ships not propelled by mechanical means, wooden ships, fishing vessels. List of resolution adopted by the SOLAS conferences. List of resolution adopted by the SOLAS conferences. Certain document required to be carried on board ships. एडिशनल सेफ्टी मेजर फॉर बल्क कैरियर क्या ही था उसके लिए, वो ड्राई स्पेसेस के लिए उसमें बोला अलार्म डाल दो अगर कोई पानी वगैरह आएगा. सो इंटीग्रिटी, वाटर इंटीग्रिटी. फिर दूसरा ये था कि उसके अंदर अपना जो डैमेज इट हैज़ अ टोटल structural strength and damage stability requirement for bulk carrier. It also explain the survey and maintenance of bulk. It also explain the survey and maintenance of bulk carrier. अच्छा, उसका सर्वे एंड वो सब मेंटेनेंस के बारे में भी बोलता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड रेगुलेशन फॉर वाटर इनग्रेस अलार्म्स. वर्ड याद रखना, वाटर इनग्रेस अलार्म्स फॉर होल्ड ballast and dry spaces and the availability of pumping systems for these areas. Additional safety measures. अच्छा हाँ, ये भूल गया यार. बल्क कैरियर अगर 150 मीटर का है, 10 साल पुराना है, तो 1780 kg पर मीट्रिक क्यूब से ज़्यादा डेंसिटी वाला कार्गो नहीं लेगा. बल्क कैरियर्स ऑफ 150 एंड अबव मस्ट बी फिटेड विथ लोडिकेटर. 150 मीटर से ज़्यादा है तो लोडिकेटर होना चाहिए. होल्ड बलास्ट एंड ड्राई स्पेसेस मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ वाटर इनग्रेस अलार्म्स. सोलास के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं अब वो डिस्कस कर लेते हैं. सोलास के अंदर बहुत कुछ अमेंडमेंट्स आए हुए हैं, जैसे अपना mooring अरेंजमेंट है. So mooring arrangement, whatever it's there, there should be a proper documentation and arrangement should be kept on board. Okay, what all like equipment and what all like documentation regarding the design of mooring arrangements and the selection of mooring equipment required to be provided and kept on board. ठीक है. Modernization of the global maritime industry. So in that what happens, like the use of generalized terms of GMDSS technology, the requirement of SAT, AIS, SAT and two-way VHF in radio telephone apparatus is now forming part of SOLAS chapter 4.
The requirement of SAT, AI, SAT and two-wave VHF radio telephone apparatus is now forming part of SOLAS Chapter 4. The removal of NBDP, narrow band direct printing function for MFHF radio installation. ठीक है, फिर उसके बाद वाटर इंटीरियर, मुझे अभी ये पता नहीं क्या है. फिर उसके बाद वाटर टाइट डोर्स ऑन कार्गो शिप्स. उसके अंदर ये बोला है कि जो वाटर टाइट डोर्स है बेसिकली वो शुड बी, जो वाटर लाइन है वो उसके ऊपर होना चाहिए. बेसिकली द डोर्स, द वाटर लाइन शुड बी बिलो द वाटर टाइट डोर्स. अब ये कैसा है क्या है पता नहीं. ठीक है, द रिक्वायरमेंट्स टू वाटर टाइट डोर इन मार्बल एनेक्स 1, द लोड लाइन कन्वेंशन, द IBC code and IGC code have been amended to harmonize the consideration of watertight doors in damage stability calculation with the same solar. The concern was related to type of watertight doors to the time of operation and to the terminology for the frequencies of watertight doors. क्या मालूम क्या है eventually. एक बार फिर से, the requirement for in Marpol Annex 1, the load line convention, the IBC code and the IGC code have been amended to harmonize the consideration of watertight doors in damage stability calculation with the same in SOLAS. The inconsistencies were related to the type of watertight doors. The inconsistencies were related to the type of watertight doors. The inconsistencies were related to the type of watertight doors, to the technical operational requirement and terminology for the frequency of use of watertight doors. Frequency of the watertight doors. The requirement to watertight doors in Marpol Annex, the load line convention, the IBC code and the IGC code have been amended to harmonize the requirement to watertight doors in Marpol Annex 1 load line convention, the IBC code and the IGC code have been amended to harmonize the consideration of watertight doors in damage stability calculation with the same in SOLAS. The requirement to watertight doors in Marpol Annex 1, the load line convention, the IBC code and the IGC code have been amended to harmonize the consideration of watertight doors in damage stability calculation with the same in SOLAS. The inconsistencies were related to the type of watertight doors, to the technical. यार नहीं समझ में आ रहा. LSA का क्या है? The launching appliance of new rescue boat less than 100 kg से कम है तो स्टोर्ड मैकेनिकल पावर की ज़रूरत नहीं है एक बंदे से, लेकिन ऑपरेट होना चाहिए. ओके, फ्री फॉल लाइफ बोट का जो था उसको 5 नॉट से जो आगे की तरफ ड्रिल के टाइम टेस्ट करते थे उसकी ज़रूरत नहीं है. विद द शिप मेकिंग हेडवेट स्पीड ऑफ 5 नॉट्स इन काम वाटर देयर आर नो एडिशनल डायनामिक लोड्स ऑन द लॉन्च. फ्री फॉल लाइट विल नॉट बी launch tested with the ship making headway at a speed of 2 in calm weather, as there are no additional dynamic loads on the launching arrangement. There are no additional because there are no additional dynamic loads on the launching arrangement. Lifeboat equipped with 2 independent propulsion systems do not need to be equipped with buoyant oars. Okay, or ships using LNG as a fuel. The International Code for Safety for Ships Using Gases or Other Low Flash Point Fuels. सो अभी एक नया IGF कोड आया है बेसिकली, उसके अंदर वो फ्लैश पॉइंट जो शिप्स का रहता है बंकर वगैरह का, उसके लिए हैज़ बीन अमेंडेड टू रिफ्लेक्ट द एक्सपीरियंस गेन्ड सिंस द कोड एंटर्ड इनटू फोर्स 2017. द मेन अमेंडमेंट एड्रेस कॉफर डैम फॉर फायर प्रोटेक्शन. यार इसके अंदर तो लेकिन कुछ बंकर के रिगार्डिंग है नहीं. द इंटरनेशनल कोड फॉर सेफ्टी ऑफ फॉर शिप यूजिंग गैसेज और अदर लो फ्लैश पॉइंट IGF code has been amended to reflect experience gained since the code entered into force in 2017. The main amendment addresses cofferdam for fire protection purpose. Cofferdam for fire protection purpose. Safe fuel distribution outside machinery space. Fire protection means space with fuel containment systems. Safe fuel distribution outside machinery space. Cofferdam to fire protection. Fire protection between spaces with fuel containment system. Fire extinguishing system in LNG fuel preparation spaces. Chapter 11 sorry. Management for the safe operation. क्या है व्हाट इज सोलास चैप्टर? ये ISM कोड के बारे में बोलना पड़ेगा. पोलार कोड के अंदर बेसिकली A-B-C पार्ट में डिवाइड कर रखा है. जो भी हमारे सबसे ज़्यादा आइस रहेगा वो पोलार ए में, मतलब जो शिप ज़्यादा आइस में चल सकते वो पोलार ए में तोड़ के आगे जाएंगे. मतलब बेसिकली उनका कंस्ट्रक्शन जो है उसके बेस पे उनको डिवाइड किया, कंस्ट्रक्शन एंड अरेंजमेंट. और बी जो है
वो थोड़ा सा कम रहेगा, और सी जो ओपन सी में जो चलते हैं उनके लिए बोला गया है। सो द पोलार कोड, और ये किसके लिए, जो दोनों पोल है नॉर्थ और साउथ उसके लिए, ठीक है। और द IMO's International Code for ships operating in polar waters is mandatory under both the International Convention for Safety SOLAS and International Convention for Prevention of Pollution MARPOL. The Polar Code covers the full range of design, construction, equipment, operational training, search and rescue and environmental protection matters relevant to the ships operating in the inhospitable waters surrounding the two poles. Inhospitable waters. The Polar Code entered into force 1st Jan 2017. The Polar Code is intended to cover the full range of shipping related matter relevant to the navigation in water surrounding the two poles. Ship design, construction, equipment, operational and training concern such, ठीक है, वो जो भी है। फिर उसके बाद कोड विल रिक्वायर शिप्स इंटेंडिंग टू ऑपरेटिंग इन द डिफाइंड वाटर of the Antarctic and Arctic to apply for a polar ship certificate, which would classify the vessel as category A ship. The code will require ships intending to operating in the defined waters of the Antarctic and Arctic to apply for a polar ship certificate. The code will require ships intending to operating in the defined waters of the Antarctic and Arctic to apply for a polar ship certificate, which would classify the vessel as category A ship. Ship designed for operation in polar water, at least in medium first year ice, which may include cold ice inclusions. Category B, a ship not including category designed for operation in polar water in the least thin and first year ice, which may include old ice inclusion. To operate open water in ice condition less severe. B में क्या बोला, शिप डिज़ाइन एटलीस्ट थीन फर्स्ट ईयर आइस, फर्स्ट ईयर क्यों यूज़ हुआ है, विच इनमें इंक्लूड ओल्ड आइस इंक्लेशन, ठीक है। कोड असाइन 3 कैटेगरीज फॉर द शिप्स डिपेंडिंग ऑन द operation conduct. A ship will face category A for ships operated in polar with at least medium first year ice, 0.7 to 0.1 meter in thickness. अच्छा, उसका thickness 0.7 से मीटर, 28 to 47 मीटर। दूसरा है 0.3 से 0.7 C for the ship, मतलब 1 से 1.1, और उसके बाद वाला है 0.3 से लेके 0.7 से कम वाले में, 0.7 से 1.2, फिर 0.3 से 0.7। The muster is a list of functions each member of ship crew is required to perform in case of emergency. The muster list shall specify details of the general emergency alarm and public address system prescribed, and also action to be taken in crew and passengers when this alarm is sounded. The muster list shall also specify how the order to abandon ship will be given. वेस्टार का पता है, लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या क्या है, ऑडिट क्या है, जो भी पास्ट रिकॉर्ड्स है उसको देख के वो सिस्टम करेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्रॉपर। ऑडिट ऑलवेज एंड सिस्टम ऑपरेशन, सिस्टम प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। आउटकम ऑफ ऑडिट इज अ नॉन कंप्लेंट बाय वेरीफाइंग द सिस्टम by checking records and procedure. Audit always focused on past activities, then detect the fault and propose the corrective action. Inspection क्या होता है कि प्रेजेंट में उसका चला के देखेंगे, सो बेसिकली PSC वगैरह करती है ना। सर्वे फोकस ऑन फ्यूचर दैट इक्विपमेंट विल कंटिन्यू टू वर्क। सर्वे आउटकम ऑफ अ सर्वे इज अ नॉन कंप्लायंस। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ सर्वे इज बेसिकली द स्टैंडर्डाइज्ड, वर्ड यूज़ करना भूलना मत, स्टैंडर्डाइज the period of validity and intervals between surveys for the main convention certificate. अब इसके अंदर क्या आता है कि PSSC द की इनिशियल एनुअल इंटरमीडिएट रिन्यूअल इंस्पेक्शन एडिशनल सर्वे, तो ठीक है, इतना तो समझ में आता है, ये भी ठीक है।
All pipe must be provided with permanent attachments of closing the inspect cargo for भी ठीक है. Difference between order that content of SEQ certificate, types of like particulars of the ship, type of ship, bulk details, bill details sorry, and dates of inspection and survey. ठीक है. और इसके अंदर एक ये फॉर्म ई, फॉर्म आर और फॉर्म सी. फॉर्म ई के एक बार देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ पर्सन फॉर विच लाइफ सेविंग अप्लायंसेज आपको, टोटल नंबर ऑफ डेविड लॉन्च लाइफ बोट, टोटल नंबर ऑफ फ्री फॉल लाइफ बोट, नंबर ऑफ रेस्क्यू बोट्स, लाइफ राफ्ट्स, नंबर ऑफ लाइफ राफ्ट, नंबर ऑफ लाइफ बॉयज़, नंबर ऑफ लाइफ जैकेट, इमर्सन सूट, नंबर ऑफ एंटी एक्सपोजर सूट्स, नंबर ऑफ टू वे VHF रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर्स. ठीक है, ये हो गया. फिर डिटेल्स ऑफ नेविगेशनल सिस्टम एंड इक्विपमेंट, स्टैंडर्ड मैग्नेटिक कंपास, जायरो कंपास, हेडिंग रिपीटर, हेडिंग ऑन और ट्रैक कंट्रोल सिस्टम, नॉटिकल चार्ट्स, बैकअप ECDs, नॉटिकल पब्लिकेशंस, 9 GHz रडार, सेकेंड रडार, AIS, VDR, रडार प्लॉटिंग एड, SVDR, स्पीड एंड डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइसेस थ्रू वाटर, स्पीड एंड डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइसेस. SEQ सर्वे का क्या क्या है? चेक लाइफ बोट एंड रेस्क्यू बोट आर इन गुड कंडीशन एंड ऑल मार्किंग्स आर क्लियरली विजिबल check winches are properly greased and in good condition, check life raft flashing and bases are in good condition, check all life jacket are in good condition and all markings are clearly visible, replace lights if required, check all pyrotechnics are up to date, check emergency and TPSs are in good condition and kept properly in designated places. Check EPUB, SAT and VHF units including portable VHF are in good condition and up to date. Content दोनों का मिला के ऑर्डर सर्टिफाई. Content form C. प्रिपरेशन फॉर SEQ सर्वे, ये एक बार रीड कर लेते हैं. ठीक है. ऑल इंस्ट्रक्शंस, notices including the emergency station, muster list and training manual were posted in the appropriate languages required and to the master's satisfaction. All other statutory certificates and the class certificate were valid at the time of survey. Fire control plans, muster list, training and maintenance manual, training manual for LSA provided, training manual for fire safety provided. ECDs is used instead of paper charts. Backup for ECDs is available. Electronic navigation publications are carried. International code of signals. All bridge equipment found in order. Each lifeboat is required to be launched and maneuvered at least once every 3 months, except there is not practicable in case of free fall lifeboats, with the maximum interval between free fall launches will not exceed 6 months. Renewal required when necessary, but at interval not exceeding 5 years. Reversal and required at intervals not exceeding 30 months. Renewal not क्या बोला समझा नहीं. Renewal required हाँ ठीक है. Not exceeding 30 months. Each lifeboat found and fully statutory mandatory. अच्छा ये मर्चेंटाइन का ठीक है भाई. डेवलपमेंट में इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, नेशनल शिपिंग बोर्ड, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन शिप्स, अमेंडमेंट एंड कंसोलिडेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ शिप्स, नेशनल शिपिंग बोर्ड, मैनिंग ऑफ शिप, सेफ्टी कंट्रोल ऑफ इंडियन शिप्स, कोलिजन पोल्यूशन प्रिवेंशन, लाइबिलिटी. D1 D2 ठीक है भाई, ये भी ठीक है. ठीक है ये भी. हाँ, ISM के कुछ एलिमेंट्स हैं. अब उसके अंदर पहला उसका 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ISM को. पार्ट ए इम्प्लीमेंटेशन, पार्ट बी उसका जो भी कंप्लायंस वगैरह है, सर्टिफिकेशन एंड ऑल, और तीसरा है उसका जो कंप्लायंस ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ द कंप्लायंस है. ठीक है. और पहले में क्या है कि इसके एलिमेंट्स जो है, ठीक है, जनरल डिस्क्रिप्शन, पहला जो भी एब्रीविएशंस है, बहुत सारे टर्म्स यूज़ हुए हैं, लाइक इन पार्ट बी
SMC, DOC. So it say the definition of all the terms used in this in the in this, what we say, in SMS. And part 2 is for the company responsibility. Second is master's responsibility. Second is designated person's responsibility. Third is master's responsibility. Then comes the master responsibility. Then comes the um, uh, shipboard operations. Then master's shipboard operations. Then emergency preparedness. Then emergency preparedness. Then comes the verification of the compliances by the company. Okay. Now last is the I guess certification is the last. So first is general safety. Okay. Second is safety and environmental protection policy. Safety and environment protect. Third is company responsibility and authority. Fourth is designated person. Fifth is master responsibility and authority. Sixth is resources and personnel. Sixth is resources and personnel. And then come the shipboard operations. And then emergency preparedness. Then come the reports and analysis of non-conformities. Then maintenance of the ship and environment. Then come the documentation, and last is the company verification, review and evaluation. So as we can know, the first is the company safety, environment and protection policy. What all policy you have, like, should be concise and clear statement. It should describe the object of SMS and outline a strategy and plan of action to achieve and maintain its aim. Consideration should be given to the policy's interaction with existing company policies and procedure. The policy should strive to encourage continuous improvement in safety awareness and safety management skill. The policy should strive to encourage continuous improvement in safety awareness and safety management skills. The policy should strive to encourage continuous improvement in safety awareness and safety management skill. The policy should strive to encourage. The policy should strive to encourage continuous improvement in safety awareness and management skill. Now third is company responsibility and authority. The company should define and document the responsibility, authority and interrelation of all personnel who manage, perform. Responsible for the operation of the ship is other than, if the entity who is responsible for the operation of the ship is other than the owner must report the full name and details of such entity to the administration. ठीक है. The company is responsible for ensuring the adequate resources. Designated person link between all these covered. ठीक है. Responsibility, authority और aspect operation resources. Master responsibility implementing the safe and environmental protection policy of the company, motivating the crew in the abbreviation of that policy, issuing the appropriate orders and instruction in clear and simple manner. Okay, verifying that the specified requirements are observed and periodically reviewed. The safety management system reporting is defined. Okay, resources personnel. The master is properly qualified and command fully conversant with the company's safety management system, given the necessary support so that the master duties can be safely performed. The company should ensure that the ship is manned and qualified with the shipboard operation. The company should establish checklist and everything. Safety of personal protection. Okay, emergency preparedness drills and all. Reports and analysis of non-conforming. The safety management should ensure that the procedure ensuring the non-conforming incident hazards which are reported to the company and investigate and analyze. The company should establish procedure for implementation of corrective action, including measures intended to prevent the recurrence. वापस से नहीं होना चाहिए. ठीक है. And then the maintenance of the ship and equipment. The company should establish procedure to ensure that the ship is maintained in conformity with the provision of the relevant rules and regulation, and which any additions requirement which may be established by the company. In meeting this requirement, the company should ensure that the inspections are held at appropriate intervals, at any non-conformity is reported with its possible cause if known. Appropriate corrective action is taken and record of these activities are maintained. The record of these activities are maintained. Records of these activities are maintained. Documentations. The company should establish and maintain the procedure to control all documents
The company should establish and documents. The company should establish and maintain the procedure to control all documents and data which are relevant to the safety management system. The company should ensure that valid documents are available at all relevant locations. Changes to documents are reviewed and approved by authorized personnel, and obsolete documents are promptly removed. Obsolete documents are promptly removed. Obsolete documents are promptly removed. The company should ensure that the valid documents are available in all relevant bodies. Changes to the documents are reviewed and appropriate by authorized personnel, and obsolete documents are promptly removed. The company should establish and company verification documentation तो हो गया. The company should ensure that the valid documents are available at all relevant. Changes to documents are reviewed and approved by the right personnel. Obsolete documents are promptly removed. The document is to risk and safety and referred to as a safety management manual. Documents should be kept in form that the company consider most effective. Each ship should carry on board all documents relevant to that ship. Company verification, review and evaluation. The company should carry out the internal safety audit on board ship and assure at intervals not exceeding 12 months to verify whether the safety and pollution prevention activities comply with the safety management in exceptional circumstances. This interval may be exceeded by not more than 3 months. The company should periodically verify all those undertaking delegated ISM related tasks are acting in conformity with the company's responsibility under the code. The company should periodically evaluate the effectiveness of the safety management system in accordance with the procedure established by the company. The company should periodically evaluate the effectiveness of the safety management in accordance with the ठीक है भाई. DOC SMC इंटरिम वेरिफिकेशन, इनिशियल वेरिफिकेशन ये तो अभी डिस्कस किया था. ना 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 ना. What is the port state officer? The person designated as responsible for development, revision and maintenance of the port facility, security plan and for license with the ship security officer and company security officers. ठीक है भाई. सिक्योरिटी लेवल ठीक है, ये सब तो ठीक है. लेवल वेगेबल ठीक है. व्हाट इज द डिक्लेरेशन ऑफ डॉस का मेन पर्पस इज टू एंश्योर एग्रीमेंट इज बिटवीन द शिप्स एंड पोर्ट interface has to respective security measure each will undertake in accordance with the provision of this approved. The agreed usage should be signed and rated by both the facility and applicable to indicate the compliance with the chapter 9 of the 11 and 11.2 part A of the SPS code and should include its duration, the relevant security levels and relevant contact data. Change in the security may require the new or revised DOS. The DOS should be completed in French. Okay, what are documents under ISPS? International ISPS, SSC, द इंटरनेशनल शिप सिक्योरिटी. वैसे यार डॉस मुझे लगता है खाली बंकर ऑपरेशन पे देखता था मैं. ठीक है. द इंटरनेशनल शिप सिक्योरिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बाय द इंटरनेशनल कोड फॉर द सिक्योरिटी शिप्स एंड कोड made mandatory in SOLAS chapter and the foreign detail the passenger ships including high speed. The ISC is required. ISP is mandatory in SOLAS chapter. No, following doesn't engage on international hold is a valid ISC. Passenger ships including high speed passenger craft, cargo ships including high speed craft, 500 km mobile offshore drilling units. Additional type of vessel includes defined by flag state and regions. The ISC certified that the security system and associated security equipment of the ship has been verified in accordance with the ISPS code. That the verification shows that the security system and any associated security equipment of the ship is in all aspects satisfactory and that ship complies with the applicable requirement of SOLAS and ISPS code. That the ship is provided with an approved ship security plan. क्या है यार.
लेबर कन्वेंशन। अच्छा, लेबर कन्वेंशन के अंदर क्या क्या आता है? पहले तो भाई उसके रिक्वायरमेंट आ जाएंगे अपने मज़दूरों के। फिट है कि नहीं, मेडिकली फिट रहना चाहिए। ठीक है, मेडिकली फिट रहेगा, फिर अपना फिर पढ़ाई लिखाई का सीन है। STCW conventions, according to that he should be competent enough for keeping watch, so वो रहना चाहिए। apart from that uh, he should be, age should be below sorry, more than 16 and 18, and if he is allowed to do watch or work at night, the age should be more than 18. And apart from that, now if he comes on board, right, for the employment, the contract papers, the agreement, the wages, the wages, and whatever, like repatriation for going back home, and all this, then comes the health. The health should be taken care by the company owner, that the what we say ना, खाना पीना ये वो, food wood, medical expenses, entertainment purposes, and in case of emergency unpaid leaves for like 2.5 days per month. So all this should be take care of the MLC. So how it is written, like technical and qualification to ensure you are trained and qualified to carry MLC, makes it clear that compliance with IMO convention, STCW, and recruitment and placement to ensure that you have access to an efficient, well-regulated employment system. Condition of seafarer. To ensure seafarer have a fair employment agreement, ensure that the terms and conditions of the employment are set out in clear, written, legally enforceable agreement. It must be compatible with the convention, compatible with the particular as regard the provisions of living and working conditions. To ensure the seafarers are paid wages monthly for their services. To ensure seafarers are paid for the overtime wages. To ensure that the seafarers are paid for their services. Right? Okay, rest hours and all. When the seafarers are paid for their services, hours of rest and okay, and entitlement of leave. अगर बीमार पड़ गए, they must give paid annual leave, shore leave. Justified absence from work for sickness must not be counted as annual leave. Okay, if sick for the reason and annual leave, okay, so get paid annual leave and shore leave. Repatriation, in normal circumstances, the employer is always responsible for the cost of repatriating the seafarer to their country of residence or other destination agreed at the end of an agreed voyage period or other circumstances set out by MLC. Ship owners must not require a seafarer to make advance payment or wage deduction to fund repatriation. हाँ, अच्छा, ये भी सही है. Ship owners must not require seafarer to make advance payment or wage deduction to fund repatriation. ठीक है. Accommodation, recreational facility and all, food catering to ensure you have good access to accommodation, recreational facility, medical care on board ship to assure the health and safety, ensure the prompt access to medical care on board ship. Okay, medical care on board and health and safety protection, accidental prevention, compliance and enforcement. Maritime labor certificate, लास्ट में certificate की बात की है dude यार. This is that these ship has been inspected and verified to be in compliance with the requirement of the conventions and the provisions of the attached declaration of maritime labor compliance. That this ship has been inspected and verified to be in compliance with the requirement of convention MLC and provisions of the attachment declaration of maritime labor compliances. That the seafarer working and living conditions in appendix 5 of the convention were found to be correspondingly every convention countries national requirements implemented. Requirement are summarized in declaration of maritime labor compliances. Okay. Declaration of Maritime Labor Compliance Part 1 DMLC is issued by attending survey taking count of the specific provisions applying to the ship
Declaration of Maritime Labor Compliance to DMLC part is completed by the ship owner. What is the latest amendment to the MLC? अमेंडमेंट्स भी आई हैं. लेटेस्ट अमेंडमेंट्स क्या है? Updated repatriation protocol. The changes also